Hello physios, I welcome you all to our channel Physio Vidyapit. We are back with our next lecture on cryotherapy. We will be studying about cryokinetics and Cryostrech techniques. Okay, so these are modern techniques which are used for the treatment protocols. Okay, that is for the treatment of patients, and these techniques are good example of combination therapy. So what is combination therapy? So combination therapy means the therapy in which we are using two or three things in a combined method for the better therapeutic effects. Okay, so my name is Vijay Kumar and let's get started. First of all, we will study about cryokinetics. So cryo means cold therapy, kinetics means movement. So we will be using cold plus active movement. See, I have written cold plus active movement. Then what are the advantages? Cold decreases pain. We have already studied it in the effects, that is physiological and therapeutic effects. Then exercise decrease the swelling and promote the healing. Yes, because whenever we do exercise, the blood flow at that part is increased, due to which healing increase while the swelling is decreased. So advantages is done. Next is disadvantage. Yes, in some patients it must be painful because already there is injury and we are doing some movement. Okay, so in some patient it is very painful, or most of the times we prefer this. Okay, because before the treatment we are applying the cold pack, that is to numb the body part so that pain is reduced. Okay, and it can be painful, or cold application can be messy. Okay, so which is not a big disadvantage. Okay, so indication: sprains. Okay, that is the ligamentous injury. Okay, next is strength training. So these are the indication. Now contraindication: any exercise or activity which can cause pain, because we are doing active movements, so there could be some exercise which can promote the pain. Okay, so we need to take care of it. Then some patients can be hypersensitive, and the other general contraindications of cryotherapy which we have discussed earlier. Then principles. This point is very important. All exercise should be active. That is, exercise must be done by the subject, that is the patient. Then exercise must be graded. That is, we have to do the slow progression in the exercise. For example, in case of ankle sprain, what we will do? We will do initially non-weight bearing range of motion, then weight bearing range of motion. And what are the exercises or the movements in non-weight bearing range of motion? Plantar flexion, dorsiflexion, inversion, eversion, and circumduction. Okay. Then slowly we will progress. By the time we will progress toward the weight bearing range of motion, that can be standing up, then shift weight from one foot to another foot, then gradually increasing the weight on injured limb. That is, we will move from partial to full weight bearing. Okay, so non-weight bearing, then stand up, then slight weight shifting, that is the partial weight bearing to the full weight bearing. And all these activities are active, that is done by the patient only. So what is the technique? Okay, so here we will first of all numb the patient body part, that is the ankle joint, by the cold application for 15 to 20 or 10 to 20 minutes, so that it is completely numb and pain is reduced. Then we will do the exercise for 2 to 3 minute exercise, and then we will re-numb the part by cold application of 3 to 5 minutes. यानी कि सबसे पहले 10 से 20 मिनट तक अच्छे से कोल्ड पैक दिया, उससे क्या हुआ, बॉडी पार्ट एकदम नम हो जाएगा,
नम हो गया, फिर क्या करेंगे, 2-3 मिनट एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर से जाकर एक बार 5 मिनट का कोल्ड पैक लगा के उसको फिर से नम कर देंगे और ये चीज को रिपीट करेंगे, विच इज कॉल्ड द cryokinetics. Okay, so this is all about cryokinetic. Now we are moving toward the Cryostrech technique. यहां पर 3 चीजें यूज हो रही हैं. यहां पर क्या था, 2 चीज, 2, that is cold plus active exercise. और एक्टिव एक्सरसाइज में भी पहले नॉन वेट बेरिंग, देन पार्शियल, देन फुल. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सारी एक्सरसाइज पेशेंट एक्टिवली करेगा, nothing is to be done passively. Okay, next is Cryostrech. It is having 3 things in it, that is cold, then static stretching, and then relax technique. Okay, cold, then static stretching and relax technique, and in some books it is written as hold relax technique. Okay, then advantages, 3 components are combined so the therapeutic effect will be added. सबके therapeutic effect मिल जाएंगे. फिर inexpensive है, कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट कॉस्ट नहीं है, सिर्फ कोल्ड पैक ही तो लग रहा है. देन डिसएडवांटेज, पेनफुल एंड मेसी, विच आर नॉट मच बिग डिसएडवांटेजेस. देन इज इंडिकेशन, लो ग्रेड मसल स्पाज्म, देन ग्रेड 1 मसल स्ट्रेन. This is muscle strain and that was sprain, that was ligamentous injury, that was, this is muscular injury. So ligament के ऊपर cryokinetics, muscles के ऊपर Cryostrech technique का ज्यादा रोल है. थर्ड इज the strain and contusions which result in spasm और टाइटनेस, यानी कि कोई भी जो इंजरी है जिसके चलते स्पाज्म या टाइटनेस हो गया है, वहां पर हमें क्रायोस्ट्रेच का यूज करना है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिव, एंड जो बाकी हमने पहले पढ़ रखा है. फिर प्रिंसिपल क्या है, आइस रिड्यूसेस स्पाज्म एंड अलाउ द मसल टू रिलैक्स. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, that is when we will apply ice will reduce pain, and pain and spasm is having a vicious cycle. So if pain is reduced, definitely the spasm will be reduced. So very easy. Next, static stretch is overcome the stretch reflex to reduce the muscle spasm. यानी कि स्ट्रेचिंग जो कि हमें यहाँ पर स्टैटिकली करनी है, वो क्या करेगा, स्ट्रेच रिफ्लेक्स को ओवरकम करेगा और स्पाज्म को कम करेगा. फिर क्या है, मसल रिलैक्सेशन विल बी मोर फॉलोइंग द स्ट्रेच. और एक बार स्ट्रेच हुआ फिर हम रिलैक्स करने के लिए, जो है स्ट्रेच हो गया उसके बाद मसल रिलैक्सेशन अच्छा होता है. ओके, सो दैट इज द रिलैक्सेशन पार्ट. दैट इज होल्ड रिलैक्स. होल्ड रिलैक्स कैसे बना कि पहले स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए होल्ड किया, फिर उसके बाद मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन. सो यहां पर भी हम एग्जांपल से समझेंगे. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ हैमस्ट्रिंग ग्रेड 1 स्ट्रेन. सी, इस चीज को हमने ग्रेड 1 में ज्यादा यूज करना है. ग्रेड 2, 3 में थोड़ा मसल टियर अच्छा हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है. सो जिसके चलते अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो कुछ एग्रेवेट हो सकता है. सो इन द ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल अप्लाई द कोल्ड फॉर 10 to 20 minutes so that the part is completely numb. एक बार नम हो गया, फिर हमने क्या करना है, 3 सेट लगाने हैं. कितने सेकंड के, 65 सेकंड के एक्सरसाइज के. यानी कि we will do 65 सेकंड एक्सरसाइज, फिर 20 सेकंड का रेस्ट, फिर 65 सेकंड एक्सरसाइज, फिर 20 सेकंड का रेस्ट, एंड देन अगेन 65 सेकंड एक्सरसाइज. 3 सेट ऑफ 65 सेकंड with 20 सेकेंड रेस्ट बिटवीन द बाउट्स, मतलब सेट के बीच में इतना रेस्ट देना है. और ये 65 सेकेंड जो है उसको फर्दर डिवाइड कर रखा है कि कब हमने स्ट्रेच देना है, कब हमने स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन देना है. सो हियर आई हैव रिटन 20 सेकेंड स्टैटिक स्ट्रेच. सो 20 सेकेंड के लिए हैमस्ट्रिंग को एक स्टैटिक स्ट्रेच दे देना है जैसे हम नॉर्मली देते हैं. फिर 5 सेकेंड का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, 20 सेकेंड का स्ट्रेच दिया,
उसके बाद इमीडिएटली हमने 5 सेकंड की आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाई, और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन. वी विल बी स्टडीइंग दिस फर्दर. ओके, सो पहले 20 सेकंड का स्टैटिक स्ट्रेच, फिर 5 सेकंड का आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, फिर 10 सेकंड का स्ट्रेच, 5 सेकंड का आइसोमेट्रिक, फिर 10 सेकंड का स्टैटिक स्ट्रेच, फिर 5 सेकंड का आइसोमेट्रिक, एंड एट लास्ट स्टैटिक स्ट्रेच. सो यू कैन सी start and end is with the stretch. Okay, so this if you add up will become 65 second, and then there is 20 second rest, and we will repeat this thing 3 times. Okay, so this is about the cryokinetics and Cryostrech. Okay, so in some books the combination of both can both is written, that is cryokinetics और stretch दोनों को यूज हम इकट्ठे भी कर सकते हैं. सो इसमें भी हम अगर बात करें कि जो फर्दर हमने काइनेटिक्स में हम फर्दर पीआरई एक्सरसाइज, दैट इज ग्रेजुअली हम रेजिस्टेंस को भी बढ़ा सकते हैं. सो यहाँ पर क्या था, इनिशियली क्या था, सिंपल एक्टिव मूवमेंट, वहां पर हम कुछ रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज पीआरई. ओके, सो प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस. ओके, so this is about cryokinetic and Cryostrech. so we will just recap it. Cryokinetics में क्या, cold pack plus movement, यहां पर क्या, cold plus stretching plus relax, 3 चीजें, यहां पर 2 चीजें. इसका मोस्टली लिगामेंट में, इसका मोस्टली मसल्स में. यहां पर हमने क्या किया, वैसे ही 10-20 मिनट को कोल्ड पैक लगाया, फिर क्या किया हमने, उसको नम कर दिया, पार्ट नम हो गया, फिर मूवमेंट करवाई. इनिशियली नॉन वेट बेयरिंग, देन पार्शियली, देन फुल वेट बेयरिंग. यहां पर क्या किया, नम करने के बाद 65 सेकंड्स के 3 सेट लगवाए, और गैप जो है वो 20-20 सेकंड का रहेगा, और स्टार्ट एंड एंड विद द स्ट्रेच, बीच में कॉन्ट्रैक्शंस रहेंगी. ओके, सो दिस वाज अबाउट क्रायोकाइनेटिक्स एंड क्रायोस्ट्रेच. आई होप दिस video lecture will be very helpful for you about the questioning regarding this particular part of cryotherapy. Okay, so in our next lecture we will study further part of cryotherapy, that is cyclotherm is left. I will give you a brief explanation of cyclotherm, because in some books it is written, so I will give you a brief explanation. Till then you keep on studying. Thank you to one and all.